Every student who decides to join CA course knows the difficulty level of this course. It is the toughest course, very less passing percentage, huge syllabus, endless study hours, and still not guaranteed कि CA निकलेगा कि नहीं निकलेगा. But still, that student joins with the belief that I can become CA and I will become CA. बट डाउन द लाइन ये बिलीफ कब ब्रेक हो जाता है पता ही नहीं चलता. मोटिवेशन डीमोटिवेशन बन जाता है, फोकस डिस्ट्रैक्शन में बदल जाता है, क्लैरिटी कंफ्यूजन में बदल जाती है, एक्साइटमेंट फेड्स अवे. आई कैन डू इट स्लाइटली बिकम्स मे बी आई कांट. आई डिजर्व सक्सेस बिकम्स सक्सेस इज नॉट फॉर मी, सीए इज नॉट फॉर मी. चैलेंजेस पता होते हुए भी हम उन चैलेंजेस से डील नहीं कर पाते. एंड ये कब होता है पता ही नहीं चलता. बट कैन वी रिवर्स दिस? क्या हम फिर से मोटिवेशन, फोकस, क्लैरिटी लेके आ सकते हैं? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. आई एम अंकिता भारद्वाज, a CA by qualification and a mentor by passion. And welcome to Mind School by CA Ankita Bharadwaj, because every mind needs training and every student deserves a mentor. आज हम माइंड ट्रेनिंग का फर्स्ट स्टेप सीखेंगे, विच इज लर्निंग टू ऑब्जर्व आवर थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, actions. That is becoming aware of what we think, what we feel, what we experience, what actions we take daily. And once we will learn this awareness now, we will be able to make a right choice of thoughts, beliefs, actions, and emotions that serves our goal, that supports our goals. So last video में हमने समझा था that it is completely normal for our mind to get distracted, to get anxious, to overthink, to see negativity first, to feel low. And this is completely normal. This doesn't mean that you are not hardworking or you are not paying enough attention to your studies. This is how a normal human mind behaves. But here is the catch: every human mind behaves differently, every human mind functions differently. हर माइंड का बिलीफ सिस्टम, इमोशंस, फीलिंग्स, थॉट्स अलग होते हैं, बिकॉज एवरी माइंड कैरीज different childhood experiences, different past experiences, different belief system, different set of fears, insecurities, different sets of strength and weaknesses. And that's why every student has a different identity. Two CA students take unsuccessful attempts as differently. एक के लिए वो पर्सनल फेलियर बन जाता है, एक के लिए वो एनालिसिस का पार्ट बन जाता है. while the one says I am a failure, अब मेरा अटेम्प्ट लग गया है, अब मुझे बिग फोर में आर्टिकलशिप नहीं मिलेगी. बट ऑन द अदर हैंड द सेकेंड वन, yes, obviously get disappointed, but he never collapse. He analyzes his mistake, again prepare well and give the exams. So now it becomes very important for us, it becomes very crucial for us to understand our mind programming. हमारा mind क्या thought generate करता है, क्या feelings हैं, क्या emotions हैं, क्या actions हैं. And we will understand this with experiments. But before that, have you noticed, whenever I am talking about mind, whenever I am discussing about mind, I am saying mind is restless, mind overthinks, mind see negativity first. I'm not saying that you are restless, you are negative, you overthink. Now you will say कि अगर mind overthink कर रहा है, that means I am a overthinker. अगर mind negative सोच रहा है, that means I am a negative person. But that's not the truth. You and your mind are two different persons. You are the one who observes the mind, and mind creates thoughts. Cognitive science says that there are two minds, the thinking mind and the observing self. The thinking mind's job is to continuously produce thoughts, feelings, emotions on an autopilot mode. But the observing self's job is to observe the thoughts, observe the feelings, observe the emotions, and take conscious decisions. So, if you can observe your thoughts, you are not the thoughts. You are not your mind. Your mind produces the thoughts, and you are the one who become aware of that. Let's do an experiment. Close your eyes and say to your mind,
Imagine a chair. Imagine a mango, a red car, a study table. Now open your eyes. What you noticed? एवरी टाइम आप अपने दिमाग को कमांड दे रहे हो ना, आपका दिमाग एक इमेज बना रहा है, राइट? सो हु इज गिविंग द कमांड एंड हु इज मेकिंग द इमेजेस? एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है? क्लोज योर आईज, सिट स्ट्रेट. नाउ से टू योर माइंड, आई एम स्ट्रेस्ड, आई एम स्लो, आई एम कंफ्यूज्ड, I can't revise the whole syllabus. Now notice how are you feeling? थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो जा रहा है, एनर्जी लो जा रही है, ब्रीदिंग शैलो हो रही है. Now again take a deep breath and now say to your mind, I am focused. I learn fast. I improve every day. I can handle pressure. I am becoming a CA. Now notice your body. Your breathing opens, your confidence rises, your energy expands. Now you can open your eyes. See, nothing changed outside. You just change your thoughts and your feelings changed. How are you feeling? When you say, I am stressed, and when you say, I am focused. So, you are the observer, you are the commander, you are the instructor, and your mind is the फॉलोअर. श्रीमद् भगवद गीता में चैप्टर 6 वर्स 5 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादये आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मनः. Krishna says, you can lift yourself with this mind. Your mind has the power to raise you. But he also warns that do not allow your mind to pull you down. The same mind can degrade you if left untrained. So, most importantly, your mind can become your best friend only when it is understood and it is trained. And now, you cannot train something, the thing you don't know about, you don't understand. So now it's become very important for us to become aware of our thoughts, to observe our thoughts. Now, every student has both positive and negative side, strength, weaknesses, empowering beliefs, limiting beliefs, clarity, confusion, motivation, demotivation. And this is normal. That is why जब आप पढ़ने बैठते हो तो एक थॉट आता है लेट्स स्टडी विद फोकस, दूसरा थॉट आता है लेट्स स्क्रॉल इंस्टाग्राम. And always our mind gives us mixed thoughts, but when awareness comes now, you will be able to make a choice of a right thought and take a right action. Awareness is not just about observing what is wrong. Awareness also includes what is right, what are my strengths. So we have to observe positives and negatives. बट हमारा माइंड एक स्टेप और आ गया है. उसको पता है कि उसे हमें कैसे कन्विंस करना है. ही इज द बेस्ट नेगोशिएटर. तो कभी भी उसको अपने वीकनेस को सपोर्ट करना होता है ना, ही ट्रैप्स अस इन अ लॉजिकल रीजनिंग, ताकि वो वीकनेस हमें और जेन्युइन लगने लगे. So while getting aware, while observing your negative patterns, you have to observe the reasoning behind your mind gives to you. So become aware when you procrastinate, when you delay your things. Your mind whispers, कल से शुरू करते हैं, आज कल ना फ्रेश माइंड से शुरू करेंगे तो अच्छा फोकस लगेगा. When you delay tough chapters, your mind says, आज इजी से शुरू करते हैं, इजी कर लेंगे ना तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और कभी टाइम नहीं आता वो टफ चैप्टर्स करने का. योर माइंड अवॉइड्स मॉक टेस्ट, और क्या रीजनिंग देता है, यार टाइम वेस्ट हो जाएगा पूरा, इससे अच्छा है तू रिवाइज कर ले, जब तेरा पूरा सिलेबस हो जाएगा ना तब देंगे मॉक टेस्ट. एंड यू नो द ट्रुथ इज कि आप मॉक टेस्ट क्यों नहीं देते हो? द रियल ट्रुथ इज क्योंकि आपको डर लगता है कि अगर मैंने मॉक टेस्ट दिया, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए तो मेरा कॉन्फिडेंस हिल जाएगा. एंड नॉट ओनली दिस, एट द टाइम ऑफ रिविजन, जब आप रिविजन करने बैठते हो तब आपका माइंड आपको बोलता है यूट्यूब वीडियोस देख लेते हैं 4-5 बार, 3-4 बार लॉ को रिवाइज कर लेते हैं,
That's it. That is the revision. When you try to recall the concepts, you try to recall the formulas, you try to practice tough questions without seeing the answers, your mind create resistance कि नहीं ऐसे नहीं करते हैं, देख के कर लेते हैं. एंड अनकॉन्शियसली आपको पता नहीं होता कितनी बार आप देख के ही आंसर सॉल्व करने लगते हो और आपको लगता है कि आपने प्रैक्टिस कर ली, आपने रिवीजन कर लिया. एंड इन द एग्जाम टाइम में आपको इतनी छोटी छोटी चीजों पे कंफ्यूजन होता है कि आपको लगता है यार इसमें भी मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ. बिकम अवेयर ऑफ द टाइम व्हेन योर माइंड डीमोटिवेट्स यू एंड मेक्स यू फील यार अब मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा है. योर माइंड मेक्स यू द विक्टिम. मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी किस्मत ही खराब है, मैं कितना भी पढ़ लू ना, जब भगवान चाहेंगे तभी होगा. क्योंकि ऐसा करने से ना उसको रिलीफ मिलता है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना चाहता है एंड ही वॉन्ट्स टू कंटिन्यू द सेम ओल्ड पैटर्न. बिकम अवेयर ऑफ द टाइम्स व्हेन योर माइंड find excuses and blames external situations, ICAI, syllabus, previous attempts. बहुत कम टाइम है इसलिए मैं नहीं कर सकता पूरा चैप्टर सिलेबस रिवाइज. एंड बिकम अवेयर ऑफ द टाइम व्हेन योर माइंड फर्स्ट मोटिवेट्स यू, देन जब आप पढ़ने बैठते हो तो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, और जब आप डिस्ट्रैक्शन में पड़ जाते हो, 1 घंटा वेस्ट कर लेते हो, तो आपको गिल्ट में भी डालता है. नोटिस करना आप लोगों के साथ ही कितनी बार होता है. बिकम अवेयर हाउ योर माइंड टेक्स फीडबैक व्हेन समवन गाइड्स यू. कोई आपको आपकी गलती बताता है, कोई आपको कुछ नई चीज बताना चाहता है, तो आपका माइंड कैसे रिएक्ट करता है? क्या वो डिफेंस मोड में आ जाता है एंड ही कीप्स सेइंग मुझे मत बताओ यार, मेरे को ऑलरेडी बहुत प्रेशर है, मुझे पता है मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ. बिकॉज एट दैट टाइम योर माइंड फील इंसल्टेड, एक्सपोज्ड, ऑफेंडेड. योर माइंड सेज मैं ऑलरेडी स्ट्रेस में हूँ, मुझे और प्रेशराइज मत करो. बिकॉज द मोमेंट योर माइंड रियलाइजेज योर मिस्टेक्स ना, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, उसको अपने ओल्ड पैटर्न्स चेंज करने पड़ेंगे, हैबिट्स चेंज करनी पड़ेगी, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा. एंड टू अवॉइड ऑल दीज थिंग्स our mind reacts emotionally in place of intellectually. And here comes the most dangerous state of mind, which is becoming comfortable in your failure. There comes a time that after repeated failures, repeated procrastination, repeated low results, your mind becomes so familiar with these things that now he never wants to change. Your mind is not in the happy zone, but it is in the familiar zone. Your mind prefers familiar pain in place of unfamiliar growth. And at this point, since no one expects anything from you now, so your mind gets relief and he becomes addictive to this because there is no fear of losing. Your mind start blaming syllabus, आउटसाइड कंडीशंस, प्रीवियस अटेम्प्ट्स एंड सबसे इंपॉर्टेंटली अपने आप को ब्लेम करना शुरू कर देता है एंड उससे भी ऊपर डेस्टिनी को ब्लेम करना शुरू कर देता है. ब्लेम्स फील इजियर टू माइंड देन टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज. एंड एट दिस स्टेज डोंट ट्राई टू सॉल्व योर सिचुएशन बाय योरसेल्फ. सीक हेल्प. टॉक टू योर टीचर्स जिनसे आपने क्लासेस ली हैं, कोचेस, मेंटर्स, because only then you can get out of this dangerous state of mind. यू डोंट हैव टू जज योर सेल्फ. आपको किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में, किसी भी वीकनेस में अपने आप को जज नहीं करना है. आपको सिर्फ अवेयर होना है कि अच्छा मैं इस स्टेट में हूँ, मेरा माइंड मुझे यहाँ पे लो फील करा रहा है. एंड इफ यू कैन सॉल्व योर सेल्फ, इट्स ओके. अगर आपको लगता है कि मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है, सीक हेल्प, टेक मेंटरशिप. उन टीचर से बात करो जिनसे आपने क्लासेस ली हैं. एंड देयर इज नो हार्म इन दिस. नाउ जस्ट लाइक एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, एवरी स्टूडेंट हैज पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. हमने नेगेटिव्स देखे, अब हमें पॉजिटिव्स के लिए भी अवेयर होना है. बिकॉज गेटिंग अवेयर ऑफ अवर पॉजिटिव साइड इज मोर इम्पॉर्टेंट देन negatives, because we have to harness our strength. So become aware of the fact that you choose CA. That shows how courageous you are. You study even when you are tired. That means you are disciplined. After so many attempts, you bounce back. That shows your resilience. You handle pressure. That shows your inner strength. You understand concepts, difficult, tricky, confused concepts. That shows you are intelligent. Observe every time your mind pushes you to do something extra, to put 1 hour extra, to do some extra efforts. Embrace that also. See, awareness of strength builds confidence, and awareness of weakness builds transformation. Awareness is not about judging yourself,
It's just noticing your thoughts, your feelings, your emotions, your actions, and becoming aware of that. Now you have the right to choose your thoughts. The moment you get aware of your weaknesses, now your weaknesses loses power, and you become powerful to choose your right thought, right actions, जो आपको आपके गोल अचीव करने में सपोर्ट करते हैं. So can you have 5 minutes with yourself? Can you sit daily 5 minutes with yourself and observe your thoughts? Let me tell you that this is the most difficult task. अगर हमें अपने दोस्त के साथ टाइम बिताना है, रिलेटिव्स के साथ टाइम बिताना है, गॉसिप करनी है, इनफैक्ट दूसरों को जज करना है, तो हमारे पास उसके लिए हर वक्त समय होता है. बट द मोमेंट बात हमारी आती है, हमें अपनी वीकनेसेस, अपनी स्ट्रेंथ नोटिस करनी है, इट्स बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, क्योंकि हमारा माइंड नहीं चाहता कि उसके ऑटो पायलट मोड को हॉल्ट पे लेके आया जाए. सो कॉन्शियसली यू हैव टू सिट विद योर सेल्फ डेली एटलीस्ट 5 minutes कभी भी, एंड यू हैव टू ऑब्जर्व योर सेल्फ. अपने एक्शंस ऑब्जर्व करो, उन एक्शंस के पीछे का रीजंस ऑब्जर्व करो. सिर्फ 12-12, 18-18 घंटे पढ़ने से नहीं होगा. आप क्यों पढ़ रहे हो 12 घंटे? इसलिए क्योंकि बोला गया है कि 12 घंटे ही पढ़ना है. आप नंबर ऑफ आवर्स से अपनी प्रोडक्टिविटी मेजर करते हो, या फिर यू रियली वांट टू स्टडी 12 आवर्स? रीजन, इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिहाइंड योर एक्शंस. और वो इंटेंशन आता है आपके इमोशन से, आपके फीलिंग से. अगर आप स्ट्रेस्ड रहते हो, आप एंजाइटी में रहते हो, तो आप 12 घंटे भी पढ़ लोगे, आपका 4 घंटे का ही आउटपुट आएगा. लेकिन अगर आप पैशनेट हो गए अपने कोर्स के लिए, तो आप 4 घंटे पढ़ के भी 4 घंटे का आउटपुट निकाल सकते हो. That's the power of awareness. So sit with yourself 5 minutes daily and observe your thoughts. Become aware of that and choose right thoughts. This way, you will start controlling your mind. You will take control of your mind, and this will be the first step towards making your mind your best friend. Okay, so if you liked today's session, do subscribe the channel, hit the bell icon, share it with not just your CA friends. आई नो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स की बात करी है, बट बिकमिंग अवेयर ऑफ योर थॉट्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी वन. सो शेयर इट विद एवरी वन. ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में. टिल देन, बाय बाय.